Hi guys, we'll be starting with lesson 3, the interpretation of statutes. Now, this is a very interesting chapter and one of my favorite chapters. Okay, let's understand what do you mean by the term interpretation. Interpretation means to understand, to construct, to explain. And statute means a law, an act, okay, or any provision of law. So interpretation of statutes is basically where the courts try to interpret, understand the meaning of a law or any particular aspect in law. So let's begin with the interpretation of statutes. Now, many times the parliamentarians, when they make the law, the legislature, when they pass any act, they ensure that they try to cover everything and every possible aspect they try to cover, so that there is no ambiguity, there is no confusion left. However, sometimes it is possible that the confusion still crops up. In that case, the courts come in and they sit and try to interpret the law and try to understand what the statute really wants to express or say. Let me give you an example. Let's say in law, many time it comes that there has been an exemption given to baby food. Okay, baby food and food products. Now it's a very simple thing that there has been given a tax exemption on baby food. Now what could go wrong possibly in this? Now the question came up, which many times it does, what do you mean by the term baby food? Before even understanding what is baby food, we have to understand what do you mean by the term baby. Ab exemption has been given to baby food. Now baby क्या है? कितने लोग किसको baby बुलाते? Who knows? Does law really want to say and cover that baby? और वो baby का food को exemption देना चाहती है? You think that is what law is trying to say? No. Then एक तो बेबी के ऊपर सवाल आया, फिर आता है कि बेबी फूड, बिकॉज योर बेबी माइट ईट एनीथिंग. सो व्हेन आई से कि बेबी फूड को एग्जेम्पशन करना है, तो मैं बैठ के देखूंगा क्या बेबी क्या क्या खाता है. योर बेबी माइट ईट एवरीथिंग. इन मॉर्निंग ही लाइक्स बॉर्नवीटा, इन नाइट ही लाइक्स, ही कैन हैव एनीथिंग. So does we mean that everything that the baby eats is exempt? Law has come out and expressed and explained what do you mean by baby food. So first they will explain the term baby. Baby, they will say that in general terms is a person whose age is below 7 years. I'm giving an example because law will have to explain what do you mean by the term baby. Then they will have to explain baby food. Now baby food को वापस बैठ के इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि baby food means what babies generally eat. When you go to a super store and you say कि baby food देना, तो he will give you farix, mashed potatoes, something like that. तो baby food को भी define करना जरूरी है. What children generally eat. So this is how many a times certain terms come up for dispute and law needs to sit, courts need to sit and interpret it. There have been many more examples also. Now let's say I'm giving in general layman's term. Sometimes you call in college or in school, there has been people tease a lot, okay? They tease, they what do you think they must be teasing this child? ये चाइल्ड को निकनेम क्या मिला होगा? कुछ तो निकनेम मिला होगा. लेट्स से इसको दूसरे बच्चे लोग परेशान करते हैं बाय कॉलिंग हिम, एनी आइडिया? बैटरी. इसको बैटरी बुला रहे हैं. नाउ व्हेन यू गो यू हैव टू इंटरप्रेट. आई एम टॉकिंग ऑफ जनरली कि ये बैटरी मतलब क्या. अब डिक्शनरी मीनिंग जाके देखूंगा तो बैटरी मतलब दो सेल्स, बट हियर द वर्ड बैटरी हैज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑल टुगेदर. सो दैट टाइम अ पर्सन, अ इंटरप्रिटर हैज टू मॉडिफाई कि वी कैनॉट गो एज पर डिक्शनरी मीनिंग.
And here we have to define this as a different thing, that is someone who's wearing specs can be considered in general terms as battery, और अगर वो बैटरी बुला रहे तो इसलिए बुला रहे क्योंकि वो specs पहन रहा है. This is called as an interpretation. In law, many times this interpretation has come and courts sit and try to explain. Sometimes they give a exemption on vegetables. Now question comes up, what is vegetable? There are so many things which might be disputed कि vegetable है कि नहीं. Like I'll give you an example. In the sales tax, they had given exemption to vegetables. Someone with coconut came up and said कि coconut को भी exemption मिल गया क्योंकि ये भी vegetable है. Then courts interpreted, no, this is not vegetable. It is not something that forms a part of food in a daily consumption. So coconut is not vegetables. ऐसे बहुत सारे आते हैं where we will study. So let's begin with the chapter. So according to Salmond, interpretation is a process whereby courts try to ascertain the meaning of the legislature. कि law उस word को क्या interpret करना चाहता है. Interpretation of statutes is a process of ascertaining the true meaning of words in a statute. Statute is a law, a act, etc. Interpretation simply means to explain, understand, translate the meaning of the statute. Normally, if a statute is clear, very well defined, do you think courts need to interpret such acts or such provision which are by its nature clear? Answer is no. What happens? Necessity of interpretation will come up only when the language of a statutory provision is ambiguous. Ambiguous मतलब double meaning. अब double meaning कैसे हो सकता है? Let's say if I say the fisherman went to the bank. Now tell me, अगर ये ऐसा आ रहा है तो डबल मीनिंग हो गया कि नहीं? कि बैंक मतलब क्या? फिशरमैन है, क्या वो रिवर बैंक पे जा रहा है या वो एक्चुअली योर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जा रहा है? तो डबल मीनिंग हो गया ये. तो ऐसी सब चीजें जब कंफ्यूजन आता है इन लॉ, देन कोर्ट्स कम अप टू क्लियर द मीनिंग व्हेन टू पॉसिबल व्यूज और समथिंग इज देयर. So here certain rules have been evolved over a period of time for helping and aiding courts to interpret. We'll be studying certain of those rules. The very first rule you can mark it as important while interpreting, and you could say this is the most common rule applied by courts. It is called as the literal rule, the primary rule or the grammatical rule. Here law says कि अगर कोई भी word समझ में नहीं आता है, please go to the dictionary meaning of the word. Go to the dictionary, go to the popular meaning, go to the actual reference book and see what it has to say. So according to the rules, the words, phrases, sentences of a statute are to be understood in their natural, ordinary, popular and grammatical meaning. This is normally also when you and me in our day-to-day lives get confused with a particular word or do not understand a certain word. We go to the dictionary and we apply the dictionary meaning. अब जब तुम डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई करोगे तब दो चीजें हो सकती है. या तो तुम्हें वो मीनिंग सैटिस्फैक्टरी लग रहा है, देन वी कैन से दैट द लिटरल रूल हैज बीन अप्लाइड एंड द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड हैज कम आउट. नेक्स्ट दूसरा भी चीज हो सकती है वेयर द ट्रू मीनिंग is not giving a sufficient meaning. When applying the dictionary meaning is leading to absurdity
absurdity means stupidity, it is not making sense. In that case, we will have to modify the meaning of the word, and that comes in the second rule. First rule is a plain vanilla rule. So let's see, when the words, phrases and sentences are to be understood in their natural, ordinary, popular and grammatical meaning, unless the construction leads to absurdity. So like as I give you the example of this, बैटरी इसको बुला रहे हैं हम लोग, और हमको समझना है कि यार ये लोग इसको बैटरी क्यों बुला रहे हैं. बैटरी जाके डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई करोगे तो डिक्शनरी मीनिंग विल नॉट गिव यू अ सेंसिबल मीनिंग टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, so that time we will depart from the dictionary meaning and not apply the literal rule. So literal rule तभी apply होता है when dictionary meaning is sufficient. So again, in the literal rule, also called as a grammatical rule, the words of the enactment, that is the act, are first given their ordinary, natural and popular meaning. If the meaning is plain, clear and unambiguous, the provisions of the enactment should be given effect as it is. तो जैसा है उसको apply कर देंगे. Then comes to the second rule, when the dictionary meaning is not sufficient. तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा कि dictionary meaning is not sufficient, then courts will have to modify the meaning of the word, depart from the dictionary meaning and try to apply a sensible meaning to it. So we will see certain legal examples also where courts have used this reasonable construction. Mark it as super important. Rule of reasonable construction, also called as a ut res magis valeat quem period. Okay, you can read it as it is. As many readers are there, that many you can hear the different kind of pronunciation will come up. But whatever, let's understand what is a reasonable construction. Normally, a statute is understood in their ordinary meaning, that is the dictionary meaning. But sometimes it does not serve the purpose. It does not serve the purpose, and in such cases, the courts can depart from the dictionary meaning. Here, a court can modify the meaning of the words to give a reasonable or sensible meaning. Courts can modify the meaning of the words to give a sensible or reasonable meaning, and that is why it is called as a rule of reasonable construction, where any provision, any word, any sentence, any phrase cannot be given their dictionary meaning, then the courts should sit and apply a reasonable or sensible meaning to it. This is called as a rule of reasonable construction. We'll see certain examples. Lee versus Knapp. In this, now these are legal words, legal examples which you can quote in the exam. What happened in section 77 of the Road Traffic Act 1960, it was said that if a driver causes an accident, he shall stop after the accident. Makes sense, what could go wrong in this? But the question came up with the word stop. Interpretation of the word stop was involved. Here the driver stopped for 10 seconds. सोचो यहाँ पे सलमान खान की कार है and 4 लोग यहाँ पे सोए थे, या 2 लोग सोए थे. Salman Khan went over them. He realized, he thought कि speed breakers है. He went over them और वहाँ पे आवाज आया. He thought कि speed breakers are making noise. So he stopped for 2 seconds and then immediately went away. He left. Now what is he saying? कि law में क्या लिखा है कि if a driver causes accident, he shall stop after the accident. तो बोला रुका मैं, इधर लॉ ने किधर लिखा है कि कितनी देर के लिए रुकना है? Because when you apply the dictionary meaning, stop means to halt.
He said, I halted. So, did the intention of the law mean this stop, that just stop for a little seconds? Answer is no. Then the court said that we cannot apply the dictionary meaning. We have to modify and extend the meaning of the word to say that you have to stop for such a reasonable time that inquiries can be made. So, in this case, the driver, after causing the accident, stopped for a moment and then moved away. Here, the court applied the rule of reasonable construction and held that as per section 77, the driver has not stopped for a reasonable period so that the interested persons can make the inquiries from the driver. This is the first example that you can remember is Lee versus Knapp. The second example is assessing authority versus Patiala biscuit manufacturers. यहाँ पे क्या लिखा था कि जो भी ये बिजनेस कर रहे थे they had to be in possession of a registration certificate. Again, what could go wrong? यहाँ पे लिखा था you should be in possession of a registration certificate. जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपके पास में गोमास्ता लाइसेंस होना चाहिए. You should be in possession of a license if you are driving. Now the question came up, what do you mean by the term possession? Because when you go to the dictionary meaning says that possession means actual possession. तो मेरे यहाँ पे रेड हुई, मेरे को किसी ने पकड़ा, तो वो टाइम पे मेरे पास में पोजेशन होना चाहिए. आई शुड बी होल्डिंग इट. नाउ लॉ सेड नहीं, ये इफ वी से एक्चुअल पोजेशन एवरी टाइम, अगर मेरे पास में दुकान है तो क्या मैं सर्टिफिकेट्स लेके घूमते रहूंगा, हर टाइम मेरे पोजेशन में रहेगा? सो law said if we do such interpretation saying that he should always be in possession, it will lead to unnecessary hardship. So then courts modified the meaning of the word and said that possession means he should have acquired it. He should have obtained it, and when it is called, he will get a reasonable time to reproduce it, to bring it to the court. Hence, if a dealer has completed all the formalities of registration and has a registration number, it is sufficient compliance of the law. So here courts are modifying and trying to bring in the real intention, object behind the act. The next rule is called as rule of harmonious construction. Mark it as super important. Now when I say harmonious, what do you mean? It's an English word, harmony se aata hai. Harmony simply means peace, peaceful. And construction means interpretation. तो एक पीसफुल इंटरप्रिटेशन करने का क्या होता है इसका मतलब? नाउ व्हेन इन अ सेम एक्ट, एक एक्ट के अंदर और एनैक्टमेंट के अंदर टू प्रोविजंस, ओके, प्रोविजन 1 and provision 2. When I say provision means section one and the same. एक ही एक्ट के अंदर दो सेक्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ऑपोजिट्स बात कर रहे हैं. सो ऐसे केस में यू थिंक इंटरप्रिटेशन शुड बी सच दैट कि यार इसको निकाल दो, इसको डिलीट कर दो. यू थिंक इंटरप्रिटेशन शुड बी सच दैट we should delete one of the provisions, or interpretation should be such that we try to reconcile both. एक peacefully interpretation निकालने का कि भाई ये भी valid है और ये भी valid है, दोनों सही है. So this is called as harmonious construction. When two provisions of the same enactment cannot be reconciled, cannot be compatible, then interpretation should be such that we should interpret it in such a way that effect can be given to both. इसको भी वैलिड कर दें और इसको भी वैलिड कर दें. हम लोग जितना हो सके उसको ये ट्राई करेंगे कि दोनों इफेक्ट में जाए. However, if reconciliation is not possible, harmonious construction is not possible, then we should not do it because it will be against the law itself. So let's see. When two provisions of the same enactment cannot be reconciled, compatible with each other, they should be so interpreted that if possible, effect should be given to both.
दिस इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के दोनों को आपस में समझा बुझा के ऐसा इंटरप्रिटेशन दो कि दोनों खुश रहे और दोनों आबाद और एक्टिव रहे. इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड अ हेड ऑन क्लैश between two sections of the same enactment, and whenever possible to construct a provision. Construct means interpret, explain a provision in such a manner that they can harmonize with each other. We'll see a very good example also for it. So in the case of Sharma versus Krishna Sinha, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दो प्रोविजन के बीच में हेड ऑन क्लैश हो गया. सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर टू प्रोविजंस. वन वाज आर्टिकल 19 एंड द अदर वन वाज आर्टिकल 194. अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इट इज. आर्टिकल 19 वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. You have a freedom of speech and expression, whereas Article 194 said about parliamentary privilege. Now parliament privilege. अब क्या था, आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है कि आप फ्रीली बात कर सकते हो, जो चाहिए बोल सकते हो, ये आपका राइट है. So I am super happy in this. Okay, so I am super happy that I am allowed to express and speak. But Parliament 194 में क्या बोल रहा है कि जो parliamentarians है, they have to maintain a certain confidentiality. Secrecy maintain करना चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है बाहर जाके लीक आउट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन. सो बात आई कि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि इसमें बोल रहे कि नहीं बोलने का. तुम जो मीटिंग होती है पार्लियामेंट की, जो डिबेट्स होते हैं, कभी कभार प्राइवेट इन हाउस डिबेट्स होते हैं, उसको रिले नहीं करते, उसको बताते नहीं है. तो वहां एक जगह बोल रहे नहीं बोलने का, एक जगह बोल रहे बोलने का. सो इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट? सो लॉ इंटरप्रिटेड इन सच अ वे दैट इफेक्ट वाज गिवन टू बोथ. और क्या इंटरप्रिटेशन था कि आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट अनलिमिटेड. इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. इट हैज अ सर्टेन लिमिटेशंस. दिस लिमिटेशंस, one of the limitations is article 194 that you sometimes have to maintain confidentiality. तो बोले ठीक है मेरे पास में स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट कभी कभार सर्टेन केसेस में नहीं होता है. I cannot. This is all considered as effect was given to both. Okay. Here a show cause notice was issued why he should not be punished for breach of parliament privilege under 194. He filed a petition under Article 32. 32 is going to the Supreme Court that your fundamental right of speech and expression is being violated. मेरे को आके बाहर लीक करना था information. The Supreme Court held that Article 194 and 19 are to be interpreted harmoniously. दोनों को अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि इफेक्ट कैन बी गिवन टू बोथ. ओके, सो व्हाट वाज द अल्टीमेट कंक्लूजिंग थिंग? दैट आर्टिकल 19 is subject to certain reasonable restriction and 194 is one of those restrictions. Coming to the next one, rule of aegisdem generis. Now this is also a very important rule, and let's understand with the help of a example. What is the name of the rule? Aedenus generis. Okay, so let's say we have Rakhi Sawant out here. Okay, now Rakhi Sawant is here with her husband. This guy is her husband or to be husband. Okay, so very dignified people. Now what happened? A fight broke out between these two. मतलब one-sided fight था. Rakhi Sawant was a little angry. She in her anger
told this innocent person कि मैं तुझे मारूंगी, I will hit you. And her sentence flow was something like this: मैं तुझे सैंडल, चप्पल, स्टिलेटोस, ग्लैडिएटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एक्सेट्रा से मारूंगी. Clear till here? There was a fight between these two peaceful people where Rakhi Sawant told her husband or boyfriend that मैं तुझे मारूंगी with this sentence: sandals, chappals, stilettos, gladiators, flip flop. Now this guy got confused and said कि ये etc मतलब क्या? The interpretation of this word etc came in. Does etc mean knife, gun? Tell me, gun include होगा इसमें when this etc. So we are trying to interpret the word etc. इसका मीनिंग समझना है हमें. Now you tell me, does it include a gun, a knife? ये सब आएगा इसमें? Or can I say this is Osho's or this कोल्हापुरी चप्पल? Now tell me, इसमें से कौन सा लग रहा है? तुमको लग रहा है कि वो राखी सावंत when she is using this sentence she is also saying कि मैं गन से भी मारूंगी? Is this covered gun in her example? Yes or no? No. Is she trying to say कि मैं तुझे नाइफ से मारूंगी, स्वॉर्ड से मारूंगी, वो भी कवर होगा? No. बट कोल्हापुरी चप्पल कवर होगा? Yes. तो कोल्हापुरी चप्पल will be covered. Now why is it like that? This is the rule of Edenius Generis. Generis means a genre, a certain category. So ये सारे जो भी words हैं, they are of a certain category. So they are of certain category of footwear. So when these are special words, okay, special words of a certain category, they are followed. Okay, इसके बाद में ये special category के बाद में certain general words आते हैं. So these general words could literally mean anything under the sun. But because etc मतलब कुछ भी. But tell me, as per interpretation, when you all try to interpret this general meaning, you all gave it a restricted meaning. You all limited the word etc to the class of the previous goods, right or wrong? So we limited the general words to that of the special category. This is called as a Edenius Generis. Means अगर words etc जो general words हैं उसके पहले certain class आ रहा है, certain category of goods, then the word etc will have limited meaning. I'll give you another legal example. Okay, like in Customs Act, they have said, we'll do it from the act, okay? In A.J. Brown, A.G. versus Brown, under the section 43 of the Customs Consolidation Act 1876, the authorities was empowered to prohibit importation of arms, ammunitions, gunpowder or any other goods. Now tell me one thing, this any other goods is a general word. Can I say these general words have come after certain special words? Arms, ammunition, gunpowder. Yes. So these general words will have a restricted meaning to this category only. Here the interpretation of the word any other goods was involved. He prohibits the importation of these things. So applying the rule of Aegisdem Generis, it was held that the words any other goods can be understood as referring to goods similar to arms, ammunition or gunpowder.
Okay, so let's read the rule. ना ये जो रूल है थोड़ा लैंग्वेज इसका टफ हो सकता है, बट इफ यू अंडरस्टूड द एग्जांपल इट विल बी वेरी सिंपल. एडिनिस जेनेरिस, जॉनर मीन्स एक कैटेगरी का. इट मीन्स ऑफ द सेम काइंड. व्हेन अ जनरल वर्ड क्या हो गया? योर एक्सेट्रा, एनी अदर गुड्स. व्हेन अ जनरल वर्ड follows a specific words of a distinct category. तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बाद में ये फॉलो हो रहे हैं, एक्सेट्रा, एनी अदर गुड्स. द जनरल वर्ड्स विल हैव अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ द सेम कैटेगरी. दिस रूल हेल्प्स व्हेन अ स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर एज टू द इम्प्लीकेशन एंड कवरेज. क्योंकि क्लियर नहीं है ना, एनी अदर गुड्स मतलब क्या, कुछ भी स्टैट्यूट ने नहीं बताया, कभी भी नहीं बताते हैं. ये आपको समझना है कि वो कैटेगरी, वो स्पेशल कैटेगरी के रिलेटेड ही बात कर रहा है. दिस इज वन ऑफ द रूल्स. इसके लिए सर्टेन कंडीशंस है. दीज फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट. दे मस्ट बी ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड्स पहले होने चाहिए. द स्पेशल वर्ड्स मस्ट बी ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी. दे मस्ट बी फॉलोड, मतलब बाद में एक्सेट्रा आना चाहिए. वो वर्ड्स, स्पेशल कैटेगरी वर्ड्स के बाद में एनी अदर गुड्स एक्सेट्रा आना चाहिए. एंड द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टिव, खत्म नहीं हो जाना चाहिए, तो एक्सेट्रा के लिए भी स्कोप होना चाहिए. दिस मस्ट बी अप्लाइड विद ग्रेट कॉशन. दिस इज द रूल ऑफ एडिनिस जेनेरिस. देन कम्स द मिस्चिफ रूल और हिडन्स रूल. This was laid down in Haydn's case, and therefore it is called as a Haydn's rule. In abroad they had, like how we have judges here, they had the barons of exchequers. So resolved by the barons of exchequers, the mischief rule says these 4 things. अब क्या होता है ये समझते हैं. अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 में मेरे को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, सो व्हाट हिडन्स रूल इज सेइंग कि गो बैक टू द प्रीवियस लॉ. आई विल हैव टू गो टू द प्रीवियस लॉ. कैन यू टेल मी प्रीवियस लॉ कौन सा है बिफोर द कंपनीज एक्ट 2013? कंपनीज एक्ट विच ईयर? There was Companies Act 1956. So what is the common law before the act? तो मैं समझ रहा हूँ कि what is the common law before the act. तो 1956 एक्ट आया. देन मेरे को जानना है कि 1956 एक्ट में क्या डिफेक्ट था कि नया एक्ट लाने की जरूरत पड़ी. What was the defect in this act? क्यों हटाया, क्यों 1956 एक्ट? तो मे बी बिकॉज इसके पास में कितना सब, दे डिडंट हैव प्रोविजन विद रिगार्डिंग टू ई कॉमर्स, डिड नॉट हैव प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ई नोटिस, ऑल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो बहुत सब टुडेज टाइम के हिसाब से नहीं था. तो वो डिफेक्ट समझ में आएंगे. एक बार डिफेक्ट समझ में आया कि अच्छा ठीक है 1956 एक्ट में ये शॉर्ट कमिंग्स या ये मिसचिफ थी. नाउ मेरे को समझना पड़ेगा कि नई रेमेडी क्या थी. What was the remedy provided by the parliament? And then lastly I will try to understand the object of the act, true reasons for the remedy. Once I do that, don't you think my understanding of Companies Act 2013 will become much stronger? Yes. So this is the mischief rule, that you go back, find out the mischief, see what was the remedy provided, go do your homework, do your background study first, then it will help you understand your present law much better. The entire logic of this is to suppress the mischief and advance the remedy. Advance the remedy. Haydn's rule is applicable only when the words are ambiguous. अगर confusion हो रहा है तभी ही हम लोग interpretation के rules apply करते हैं. The object is to suppress the mischief and advance the remedy. In Sora Devi's case, in the case
it was held that the Hayden's rule is applicable only when the questions are ambiguous and are capable of more than one meaning. Ambiguity means confusion, double meaning. An extension of the Hayden's rule can also be called as a purposive rule. Purposive rule भी यही बोलता है go back, but also they are saying that understand the purpose of the law. What is the main? तो Hayden's rule को हम लोग purposive rule भी बोलते हैं, जिधर बोलते हैं कि आप understand the purpose of the law. Why did this law 2013 come into force? Then we are done with the main rules. Then we are coming to other rules of interpretation. One of this they can ask you is expressio unis est exclusio alteris. Now what is it? Few words I'll tell you from here, which you remember, you can answer the question. Expressio means express. Mentioning of one thing means the exclusion of the other. These two words you need to know. Expressio means express. Mention of one thing means the exclusion of the other. Let's understand what it means. If I say all boys are there in the room, tell me, express mentioning that there is boys will mean that automatic understanding ki who are excluded, who are not there in the room. Girls are not there in the room. Same way, अगर लॉ किसी को स्पेसिफिकली बोल रहा है तो इसका मतलब दूसरे लोग नहीं इन्वॉल्व है इसमें. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Article 19 expressly states that these rights are available only to citizens. So express mentioning of citizens means that other than citizens को ये remedy नहीं मिलेगी. तो Article 19 जो है freedom of speech and expression, can foreigners claim this benefit? Yes or no? Foreigners can claim this fundamental right of Article 19. Answer is no. Non-citizens cannot claim these rights. क्यों ऐसा? क्योंकि express mentioning of one thing means that the others are excluded. This rule means that the express mention of one thing implies the exclusion of the other. If one or more things which belong to a particular class is mentioned in the act expressly, then the other things which are not expressly mentioned are excluded. Next comes contemporio exposio est optima est fortissima in legi. Okay. From here again, if it comes, you need to know one word. Okay. That is contemporio. Contemporio means what? It comes from the word contemporary. Can you tell me contemporary matlab kya? What do you mean by the term? Of the same time. Perfect. So contemporary means living at same time. So tell me, you and Gandhiji are contemporaries? No. But you and Narendra Modi are contemporaries. You all are living of the same time. So ये क्या होता है कि जब लॉ बनता है तो मे बी लेट्स से today's time and I am looking at Constitution of India. When Constitution of India was made, were you born? No. You don't know what it is. So if I really want to understand the Constitution, if I really want to understand India, I have to go back in time. When the Constitution was enacted, what was the circumstances that time? How the people used to think that time? What were the issues involved that time? So it's simply saying go back in time, take a time machine, go back when the legislators were there, what they were thinking. So simple meaning, go into the shoes of the maker.
You have to go in shoes of maker. This will give me a better understanding of a law. It's simple. So the maxim states that the best way to give meaning to a document is to read it as it would have been read when it was made. Statutes should be interpreted as they would have been interpreted at the time when they were passed. It is important to step in the shoes of the maker to understand the true intention of a statute. Next, nostris a socius. Okay, simple, I can call it as, you can write it aju baju. Okay, simple meaning that a word, the meaning of the word can be determined from its associates, from its surrounding or accompanying words. मतलब क्या, अगर वहां पे बोल रहे that it is a scam, it is some word, it goes in sequence. Okay, Ponzi scheme, it is fake, it is, fraudulent. अब तुम्हें इसमें से लेट्स से पॉन्जी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि पॉन्जी का मतलब क्या है. So now you don't know what it means, but from the associating words you can figure out what does this mean. From the ascending words, the words coming before it, and from the descending words. Okay, the words preceding and succeeding, say you can determine the meaning of this. This is called as, this is the rule of nostris a socius. That is, it is known by its associates. In other words, the meaning of a word should be known from the accompanying or associating words. It can be derived from the preceding words and from the succeeding words we can derive इसका meaning. काफी बार हम लोग यही करते हैं, आजू बाजू के वर्ड से उसका मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. A word in a statutory provision is to be read in connection with its companion words.
strict and liberal interpretation. Certain statutes have been given strict interpretation and certain statutes have been given liberal interpretation. Strict interpretation is given to penal statutes and taxation statutes. क्या होता है ये समझते हैं. It is a well settled rule of construction that penal statutes could be your IPC, that is your law of crimes, is that if there is a reasonable interpretation which will avoid the penalty in a particular case, we must adopt that construction. If there are two reasonable constructions, we must give the more lenient one. Criminal laws are given strict interpretation that unless the accused is found guilty by clear terms, he cannot be punished. So, have you heard that the benefit of doubt always goes to the criminal? That if there is a doubt, then we cannot punish him. He has to be strictly falling within the statute or within the criminal laws to punish him. A person needs to be proved beyond reasonable doubt that he has done the crime to punish him. So this is called as strict interpretation कि भाई अगर किसको तुमको ऐसे पेनल्टी डालनी है तो एकदम क्लियर कट फिट हो रहा है ना तो ही डालना, नहीं तो उसको छोड़ दो. For instance, when an act is provided for punishment causing wound by cutting or stabbing and the accused was wounded by biting, तो लॉ एकदम स्ट्रिक्टली देखेगा कि कब पनिश होता है, जब कटिंग और स्टैबिंग मीन्स कोई वेपन के साथ में. तो बाइटिंग इट वाज नॉट कवर्ड, दैट कटिंग और स्टैबिंग implied a external instrument, while biting does not involve an external instrument. Even in case of taxation, strict interpretation is given. Now, tax is a monetary burden on the taxpayer by the authority of law. Here, unless a person or a transaction does not clearly or strictly fall within the ambit of the taxing statutes, tax cannot be imposed on him. So, because see, these are all punitive or burdensome statutes. So, law tries that till you don't strictly fall into it, we will not bring you in. So, it is in favor of the assessee, the taxpayer, or the accused, that till you don't clearly the parties cannot prove that you are bound under the act, you will be free. The next is considered to be liberal and beneficial constructions. Now these are given in case of welfare statutes. जिसमें वेलफेयर दे सकते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा एक्सटेंड स्ट्रिक्ट नहीं बनते, उसमें जितना वेलफेयर दे सकते हैं ना वो देते हैं हम लोग. So beneficial construction is a statute which purports or tries to confer a benefit on an individual. तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उन्हें बेनिफिट दें. Such a benefit is given by interpreting the statutes liberally, and thus beneficial statutes should be interpreted liberally. Labor and welfare laws are given liberal interpretation since they are beneficial pieces of legislation. For example, बहुत सारे examples हैं. In Alembic Chemical Works versus Workmen, in the Industrial Tribunal, क्वेश्चन आया था कि उसको पेड लीव्स कितना देना चाहिए. So by giving one interpretation, he was let's say getting 10,000 amount as paid leave, और दूसरे इंटरप्रिटेशन से उसको 12,000 पेड लीव मिल रहा था. पेड लीव का कैलकुलेशन. सो टेल मी विच वन शुड बी अडॉप्ट. लॉ को कौन सा इंटरप्रिटेशन उठाना चाहिए जब दोनों ही पॉसिबिलिटीज है. सो अकॉर्डिंग टू द बेनिफिशियल वन वी शुड चूज द वन दैट गिव्स अ greater benefit to the person. The Supreme Court held that enactment being a welfare legislation for the workers had been too beneficially constructed in favor of the worker. Thus, if words are capable of giving two meanings, the one that gives the more the benefit will be used. Even in another case, in case of Unicorn versus State of Kerala, law said कि
मिनिमम वेज जो था अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन एंड जितना हो सके हम उन्हें ज़्यादा वेजेस देंगे. आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. सपोज अगर हम लोग बोल रहे कि इन केस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओके, मैटरनिटी बेनिफिट व्हेन women is going to expect a child, that time they get a certain paid leaves. तो लेट्स से वहां पे लिखा है कि उसको 2 weeks की सैलरी मिलेगी. ओके, 2 weeks सैलरी. ना उनको पर डे कैलकुलेशन था, सिंस दे वर वर्कर्स एंड ऑल दोज लेबरर्स, पर डे का काउंटिंग था. नाउ बोला लॉ में खाली क्या लिखा है कि 2 weeks. तो व्हाट डिड 2 weeks मतलब हाउ मेनी डेज. तो डेज का कैलकुलेशन करने आया. तुम्हारे हिसाब से कितने डेज होते हैं? एक आ रहा था 14 डेज और दूसरा इंटरप्रिटेशन आ रहा था, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि भाई संडे को तो वैसे ही ऑफ रहता है वीक में, तो 6 दिन करके मैं काउंट करूंगा, तो मेरे हिसाब से सिर्फ 12. तो ही टुक एज वर्किंग डेज, संडे ऑफ काउंट किया उसने. नाउ टेल मी, वन पर्टिकुलर वीक से हमको 2 इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, बिकॉज लॉ ने बोला 2 वीक की सैलरी देनी चाहिए. अब 7 दिन लू कि मैं 6 दिन लू, तो क्या लग रहा है एज पर बेनिफिशियल लॉ विच इंटरप्रिटेशन विल बी सिलेक्टेड, 14 और 12? तो लॉ विल चूज द वन विच गिव्स अ ग्रेटर बेनिफिट टू द person since it's a welfare legislation. So we are done with the rules. Now we'll be doing some aids on interpretation. Now aids on interpretation means what? Certain help for interpretation. Internal aids क्या होता है? It is, aids means help. So these are all help within the act to understand the act better. जो भी लॉ बनाते हैं वो लोग जानते कि डाउट्स आ सकते, तो पहले से ही सब एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस सब डाल के रखते हैं वो लोग, शेड्यूल्स, एक्ट, ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग में इजी हो. सो विद इन द एक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या करते हैं वो लोग, लेट्स सी. टू अंडरस्टैंड बेटर दे गिव सर्टेन एड्स. दीज एड्स विद इन द एक्ट, विद इन एक्ट इज कॉल्ड एज इंटरनल एड्स. और लॉ ट्राई करेगा कि यही इंटरनल एड से किसी को भी लॉ क्या है समझ में आ जाना चाहिए. सबसे पहले इज द टाइटल. टाइटल, देयर कैन बी अ शॉर्ट टाइटल एंड देयर कैन बी अ लॉन्ग टाइटल. पहले के जमाने में द नेम ऑफ द एक्ट, टाइटल मीन्स द नेम ऑफ एक्ट, यूज्ड टू बी हेनरी 8, स्टैट्यूट 8. अगर मैं तुम्हें बोलूंगा स्टैट्यूट 8, तुमको पता चलेगा कि काई के बारे में लॉ है? नहीं. तो पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, हेनरी 8, स्टैट्यूट 8, वैसा सब रखते थे. तो देन व्हाट लॉ सेड कि नहीं, अभी हम लोग नाम ऐसा रखेंगे कि नाम में ही तुम्हें समझ में आएगा काई के बारे में है. सो व्हेन आई से इट्स अ सिविल प्रोसीजर कोड, तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, इससे सिविल मैटर्स का प्रोसीजर लिखा होगा इसमें. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो तुमको समझ में आएगा इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज इन द टाइटल ओनली यू विल कम टू नो व्हाट इट इज रिलेटेड टू. लास्ट एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू कंपनीज एक्ट, so you come to know it's an act related to companies. So this is called as a short title. Long title क्या होता है? Long title is an act to consolidate and amend the law relating to civil procedure. So they will say it's an act, थोड़ा एक लंबा सेंटेंस लिख के देंगे, an act to consolidate. Consolidate means strengthen and amend the law respect to civil procedure. Criminal Companies Act में भी लिखा रहेगा it is a act to consolidate and amend the law relating to companies. Then the next one is a preamble. Preamble is a small gist of the act. It comes before the act. Preamble is not a part of the act, but it has a certain motives to help you understand the act. Like अपना constitution के अंदर भी preamble होता है. It gives a window into the mind of the makers. The preamble is considered as a key
to the meaning of the makers of the act. Whenever in the act there is ambiguity, जब भी एक्ट के अंदर कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम लोग प्रीएम्बल को जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड. इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल की फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्ट एंड रिजॉल्विंग एम्बिग्विटीज इन रिस्पेक्ट टू इट्स कवरेज. अगर स्टैट्यूट ही क्लियर है तो प्रीएम्बल में जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, एक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेरियस हेडिंग्स, चैप्टर्स, टाइटल्स, ताकि अपना कॉम्प्रिहेंशन हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कंपनी लॉ में भी एक चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स. तो अगर मुझे खाली डायरेक्टर्स के बारे में जानना है तो मैं खाली डायरेक्टर के चैप्टर में जाऊंगा. अगर मुझे मीटिंग्स के बारे में जानना है तो मैं सिर्फ मीटिंग के चैप्टर में जाऊंगा. जैसे तुम्हारी बुक भी चैप्टर्स में डिवाइड होती है, वैसे एक्ट भी सर्टेन चैप्टर्स में डिवाइड होता है. चैप्टर के अंदर सेक्शंस होते हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड का अलग चैप्टर है. तो कंपनी लॉ में एक अलग ही चैप्टर है इसके ऊपर, एंड सेक्शन 123 टू 127 कवर होता है इसमें. तो इससे क्या होता है, व्हाई ब्रेक इट इनटू वेरियस चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस, व्हाई डू लाइक दैट? सो अ एक्ट कैन बी रियली बल्की. You need to break it down in various parts so that it enhances, increases comprehension and understanding. और वो sequentially linked होता है. पहले incorporation आएगा, फिर बाद में prospectus आएगा, फिर shares के बारे में आएगा, फिर ऐसे dividend, फिर लास्ट में वाइंडिंग अप के बारे में. तो लॉजिकली एंड सीक्वेंशली भी चैप्टर्स और टाइटल्स को डिवाइड करता है. एक्ट के अंदर सर्टेन साइड नोट्स हो सकते हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, फुट नोट्स हो सकते हैं जो बता सकते हैं कि ये साल में अमेंड हुआ था, कब आया था. तो इट इज इंसर्टेड समटाइम्स एट द साइड ऑफ द एक्ट. इट इज नॉट गिवन मच वेटेज बट जस्ट हेल्प्स यू in case of confusion. Interpretation clause, also called as a definition clause, which is always covered under your section 2. कोई भी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 देखोगे ना, डेफिनेशंस दिया होगा. तो उसमें डेफिनेशंस दिए हैं, तुम उसको पढ़ के खुद ही डिफाइन करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ईयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिविडेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डायरेक्टर. ये खुद लॉ लेजिस्लेटर्स तभी बना देते ताकि कंफ्यूजन ना हो. नेक्स्ट आता है प्रोविजो. प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो, द वर्ड्स प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट denote certain provisos. Provisos are clause of exception or qualification of an act. There are certain exceptions. These are certain exceptions to the main provision. So I can say proviso qualifies an exception. अगर तुम देखोगे exceptions होते हैं हर चीज के लिए. जब exceptions लिखा होगा तो I can use the word proviso. So provided the provision of the chapter shall not apply to XYZ, तो exceptions बना देने का. So for example, director, a person can act as a director provided if he has been convicted by a law for more than 5 years, he cannot become a director. तो मैंने एक एक्सेप्शन बना दिया कि कोई भी डायरेक्टर बन सकता है प्रोवाइडेड उसको जेल ना हो. जेल हुई होगी तो उसको नहीं बनाएंगे. तो मैंने क्या किया, आई कार्व्ड एन एक्सेप्शन फ्रॉम द मेन प्रोविजन. सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन दैट एनीबडी कैन बिकम अ डायरेक्टर प्रोवाइडेड जेल नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड उसको ये नहीं होना चाहिए. तो वो एक्सेप्शन है. दूसरा, आई कैन ऑल्सो यूज प्रोविजो as a qualifying for a qualification to qualify something. For example, I can say any person can become a director provided that he has a DIN number, that he has a director's identification number. So proviso, many times in the law also when you will read so many provisions are given. These are like conditions कि आपको डायरेक्ट ये DIN चाहिए रहेगा. एंड कभी कभार एक्सेप्शंस कि ये सब लोगों को नहीं अप्लाई होगा. देन कम्स इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन इन द लॉ. व्हेन यू रीड व्हाट डू यू मीन बाय डेफेमेशन, तो वो लोग खुद एक्ट के अंदर ही समझाते हैं इन इंडियन पीनल कोड
they'll explain that A threatens to publish defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. A has committed extortion. So many times they have given illustrations or examples within the law only. For example, if I am saying what do you mean by the term house breaking, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है लॉ में कि हाउस ब्रेकिंग मतलब क्या. इफ आई मेक अ डुप्लीकेट की, इफ आई एंटर थ्रू विंडो, ऑल ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाउस ब्रेकिंग. ये किधर दिया है? एग्जाम्पल में इलास्ट्रेशन देते हैं व्हाट अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग. सो दिस वी आर सीइंग in the act itself. There are many illustrations given to clear what the law has to say. Then there are many schedules also. Schedules are also a part of the statute. They explain things in detail. Now when the internal aids are not sufficient, after I have gone through everything, definition देख लिया, फिर भी समझ में नहीं आया. When the internal aids are not sufficient, then you will have to go to external aids. External aids क्या होता है? I have to go to the parliamentary history. मुझे देखना पड़ेगा कि वो दोनों bills जब पास हुए थे तब क्या हुआ था. I have to go much more in detail outside the act now. I will have to go reference to various reports of committees. कभी कभार कोई भी लॉ बनता है ना तो एक स्पेसिफिक कमिटी बनती है. आईबीसी बन रहा है तो अंधारियोजिना कमिटी बिठाई. व्हेन देयर इज जीएसटी बिठाया तो केलकर कमिटी को बिठाए. ऐसे कोई कोई कमिटीज के रिपोर्ट्स पे लॉ बनता है. सो व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन इन द एक्ट, आई विल गो टू द कमिटी रिपोर्ट्स. रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूट्स इन पैरीमैट्रिया. मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. They call it as statutes in parimatria. Now what does parimatria means? Pari means same and matria means subject matter. तो सोचो अगर कंपनीज एक्ट 1956 में कंफ्यूजन आया, कंपनीज एक्ट 1956 में 2013 में कंफ्यूजन आया, so I can go and refer Companies Act 1956. क्यों ऐसा? क्योंकि they are statutes in parimatria. Again, statutes dealing with the same subject matter. अगर मुझे GST के एक्ट में कुछ confusion होता है तो I can go to your customs or your service tax related laws. उधर जा सकता हूँ बिकॉज ये उसका प्रीवियस एक्ट है. वो एक एक्ट है विच इज द सेम सब्जेक्ट मैटर. समटाइम्स वी ऑल्सो टेक रेफरेंस ऑफ फॉरेन डिसीजंस. समटाइम्स इंडियन लॉ was based on a foreign judgment. Like for example, absolute liability was based on strict liability given under Ryland versus Fletcher. तो अगर मुझे ये चीज में प्रॉब्लम है ना तो मेरे को फॉरेन डिसीजन पे जाना पड़ेगा कि यार राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या बोला था. सो आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्टैट्यूट टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट बेटर. आई कैन ऑल्सो रिफर टू डिक्शनरीज फॉर एनहांसिंग माई अंडरस्टैंडिंग. देन केम सर्टेन प्रिजम्पशंस. नाउ प्रिजम्पशन इज डिफरेंट फ्रॉम assumption. Assumption इज रैंडम मेकिंग अ गैस. बट लेट्स से अगर मैंने presumption is to assume with certain proof or with some evidence, okay, or some reason. For example, अगर मैंने खाना, अभी किसी ने घंटी बजाई और मुझे पता नहीं कौन है तो मैं assume कर सकता हूँ ये होगा वो होगा. बट अगर मैंने खाना ऑर्डर किया था डोमिनोज से और अभी आधा घंटा हो गया तो मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है उसमें कि मोर प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट इट वुड बी द डोमिनोज गाय. सो दैट इज अ प्रिजम्पशन. लॉ सेज व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लॉ यू टेक सर्टेन प्रिजम्पशंस. आप ये सब मान के चलो. क्या मान के चलना है? ये सारी चीजें कि Parliament knows the law, Parliament does not make errors, the
judiciary knows the law, the principles of natural justice are always fairly exercised. तो हम लोग always ऐसा presume करेंगे कि सब कुछ बराबर चल रहा है, और जो challenge कर रहा है burden of proof is on him. So presumption will always be in the favor of validity, in the favor of the legislature, in the favor of legality, कि सब कुछ सही चल रहा है. The words in a statutes are used precisely, accurately and not loosely. तो हम लोग ऐसा presume करेंगे. Vested rights cannot be just taken away without express words. तो clearly बोल के ही किसी के rights ले सकते हैं. Mens rea is guilt is required for criminal matters. ये सब चीजें are true facts. A state is not affected by statute unless expressly stated. Legislature knows the law, legislature knows the practice, legislature does not make any alteration unless by express enactment, legislature does not make mistakes, doctrine of natural justice are always fairly exercised. So ye sab you can remember a few of them. This is not come in the exam. And that is it. We are done with the chapter. Now we'll be done. Now we'll be doing the exam questions. Now what all questions have come in the exam? This is covering all the exam questions till date. First they have asked what is the rule of reasonable construction. Reasonable construction means the courts can depart from the dictionary meaning and apply certain reasonable or sensible meaning. Then comes what is purposive rule of interpretation. Now this is there in the next chapter, the General Clauses Act, that time we will see. But this is, you can remember, is very similar to the Haydon's rule. Haydon's rule, that who was the law before that, what was the object of the law. And just remember, purposive rule says that you have to understand the purpose of the act. You should understand. And you see everything with respect to the Haydon's rule is written. Then they have asked what is the rule of beneficial construction. So certain welfare laws are given beneficial or liberal construction. We try to give as much benefits or welfare as possible. So when two interpretations are allowed, the one giving more benefit will be selected. Then came the rule of ednis generis, that when certain special categories of words are followed by general words like etc., any other things, this etc. or general words will have a limited meaning to the special category words only. Then they have asked rule of harmonious construction. Harmonious construction is when there is a head-on clash between two provisions of the same enactment, then interpretation should be given such that effect can be given to both. तो जब भी हेड ऑन क्लैश होता है बिटवीन टू प्रोविजन ऑफ द सेम लॉ, तो लॉ हमें ऐसा इंटरप्रेट करना चाहिए कि इफेक्ट दोनों को मिलना चाहिए. सो वी हैड सीन आर्टिकल 19 विच गेव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 194 में बोला कि पार्लियामेंट में जो बात है वो कॉन्फिडेंशियल है, बाहर नहीं बोलना चाहिए. तो एक प्रोविजन बोल रहा है बोल सकते हैं, दूसरा बोल रहा है ऐसा नहीं बोल सकते. तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन में क्या किया कि बोला कि आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड 194 इज वन ऑफ देम. ऐसे बोल के दोनों को अप्लाई करा दिया. देन केम द मिसचिफ रूल. मिसचिफ रूल वाज आल्सो कॉल्ड एज द हेडिंग्स रूल, barons of exchequers, where you try to suppress the mischief and advance the remedy. And that is it. We are done with the chapter.